Hello everyone. Today we are going to talk about the most important subject in the stock market, that is risk management. It's very important by every means because if you don't follow it, before starting you are out of the market. So your dream to come true means you have to have risk management very perfectly and you should follow it up to the dot. रिस्क मैनेजमेंट के बगैर आप लोग स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। शुरू करने के पहले ही आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट योर मनी। हम अपने पैसे को कैसे बचाएं। मार्केट एक वैक्यूम है, उसके अंदर जो घुसता है अगर उसे समझ में नहीं आएगा तो खींच लेगा, पूरी की पूरी आपके पैसे खींच लेगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट हो देन यू विल नो दैट हाउ मनी मेकिंग इज ईजी। समझ गए? वी हैव टू टेक ओनली द मिनिमम रिस्क एंड हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम समझेंगे कि आई विल टेक हेवी रिस्क देन मे बी द रिवॉर्ड इज बिग बट यू नेवर नो, द होल थिंग विल गेट स्वाइप्ड आउट इन वन नाइट। एक ही रात में आपका जितना पैसा है सब निकल जाएगा। इसलिए आप यू हैव टू प्लान इट वेरी वेल टू स्टे इन द मार्केट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसको प्लान करोगे सही तरीके से तो आप बहुत लंबे समय तक मार्केट में रह पाओगे, और लंबे समय तक जब मार्केट में रह पाओगे आप सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे और आप पैसा बनाते जाओगे। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा नुकसान नहीं होगा, होगा। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि बस मुझे पैसे ही आने हैं, मैं जीतना ही है। देयर विल बी फेलियर्स ऑल्सो, देयर विल बी फेलियर्स। कुछ वक्त में आपका कोई स्टॉक में आपका पैसा जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो शायद 1 या 2 में आपका पैसा जा सकता है, लेकिन बाकी 8 ट्रेड में आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप गलती करोगे और आपने सारे पैसे एक ही जगह पे लगा दिया देन इवन गॉड कैन नॉट सेव यू। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का डेप्थ इतना है, वॉल्यूम इतना है, स्टॉक्स इतने इतने लगते हैं यहाँ पे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इट्स अ बिग वॉल्यूम दैट इज़ बीइंग ट्रेडेड इन दिस मार्केट। इफ़ पीपल लर्न हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट दे कैन अर्न quite well in this market and survive a living. They don't have even to work. ये बताने के लिए आपको एक इस तरह से एक मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट शीट लेकर आए। दिस रिस्क मैनेजमेंट यू हैव टू फॉलो दिस रिस्क मैनेजमेंट शीट व्हाट आई एम गिविंग यू विल फाइंड इट इन द लिंक बिलो। दिस विल हेल्प यू टू सर्वाइव, टू स्टे इन द मार्केट, and you will know how much quantity of shares you need to take, how much risk you need to take. You will know everything. I will give you this list. Trading capital, risk per trade, maximum loss you can take, entry, stop loss, how much stop loss per share, what is the rate per share you will be losing if you put a stop loss, how many quantity you need to buy, and what should be your investment. Here the first column states how much is your capital. This column states how much is your capital. Presently I have written here 2 lakhs. You can change it as you need. So this particular sheet I am going to give you, and I will explain to you this in a few minutes. I will explain to you how you have to do this. इस शीट को किस तरह मेंटेन करना है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप फिलहाल तो 2 लाख रुपए लिखे हैं, लेकिन आप आपके रकम डाल सकते हो, जो कैपिटल आपके पास है वो रकम डाल सकते हो यहाँ पे। इस शीट को कैसे फॉलो करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपका टारगेट सेट करना है, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये शीट आपको मिल जाएगा नीचे। ये शीट जब खुलेगी यू जस्ट हैव टू पुट इट सेव एज एंड डाउनलोड इट टू योर कंप्यूटर, and then you have to follow this sheet very strictly. इसको काफ़ी strictly follow कीजिएगा। Lot of people trade with the mindset of fear, और don't trade with the mindset of fear. हर इंसान के अंदर है डर, fear of losing. So many people what they do is they may take 1, 2 or 3 trades in the market and they lose in all the 3 trades. Then there is a 4th trade which is there
which they will not take because there is a fear in them that like the 3 trades I will lose this also. And what happens? और चौथा जो ट्रेड है वो चल पड़ा ऊपर ऊपर ऊपर. The fourth trade makes such profit that all the 3 trades what you have lost is covered in this fourth trade. But unfortunately, you have not taken the trade because of fear. The fear is there because we are not following the proper risk management. The fear overtook your mindset to make a trade. Hence, you need to follow 100% with risk management. That is why in the beginning, from the beginning, I am saying risk management is the most important thing in the stock market because every person has different appetite of taking risk. हर इंसान अलग तरह का होता है. कुछ में ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी होती है, कुछ में कम, कुछ में बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते. ऐसे भी लोग हैं. हर इंसान अलग है. So what happens is when fear is there in the mindset, in the mind, taken over by the mind, you are not able to make trades, you are not able to make decisions. Decision नहीं ले पाते हो आप इस डर की वजह से. अगर आपने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करेक्टली फॉलो करोगे तो ज़रूर जीतोगे. और ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में तो 5,000 से ज़्यादा कंपनीज के शेयर्स है. आप 5,000 शेयर्स कैसे स्कैन करोगे ये भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में. अभी अब बताने जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. इट विल बी वेरी टू लॉन्ग फॉर मी. आई एम सेइंग इट विल टेक टू लॉन्ग टू let you know how to scan and everything. So we will go step by step. How much trades you need to take? You need to take how many trades? This is also a very important thing. Some people take 20, 30 trades and they don't know, they themselves don't know what trade they have taken. They are not able to make a track of it. So it's very, very, very important that you know how many trades you should take, how much risk you should take. By taking how much risk you will get proper sleep. मेरे पास आज समझो 2 लाख रुपए है. मैं 2 लाख रुपए में से अगर 15,000 मेरा गया तो चलेगा, मुझे नींद आ जाएगी. वो माइंडसेट आपका होना चाहिए. 15,000 रुपये में से 2 लाख रुपए में से अगर मेरा 10,000 रुपये गया तो चलेगा. 10 से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता. फाइन, यू आर द डिसीजन मेकर. आप डिसाइड करोगे कितना रिस्क लेना है. लेकिन हाँ, यू आर नॉट सपोज टू चेंज इट विदाउट यू हैविंग एन इनकम. आपके पास इनकम नहीं है और आप चेंज करोगे उस रिस्क मैनेजमेंट का शीट को और आप बोलोगे नहीं 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 मेरे पास 2 लाख है फिर मैं 50,000 का लॉस सहन कर लूँगा. आपको बोलना नहीं है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग. नोबडी इज लिसनिंग. आपको सोचना है, खुद सोचना है. आपके दोस्त को नहीं पूछना है भाई तू कितने का रिस्क ले रहा है भाई तो मैं भी उतना ही रिस्क लूँ. नहीं, हर आदमी का रिस्क लेने का एपेटाइट अलग होता है. हर आदमी का रिस्क लेने का कैपेसिटी अलग होता है. इसलिए खुद सोचो. थिंक योरसेल्फ हाउ मच रिस्क यू कैन टेक. मैं बस 2 लाख रुपए में से मेरे पास 5 लाख है. मैं 5 लाख में से सिर्फ 25,000 रुपये की रिस्क लूँगा या 10,000 रुपये की रिस्क लूँगा या 20,000 रुपये रिस्क लूँगा. ये आप सोचो. यू हैव टू थिंक और हाउ मच रिस्क यू विल बी टेकिंग. सो दिस शीट ओवर हियर विल हेल्प यू and you need to follow it very, very, very strictly. You need to follow it very strictly. थोड़ा भी यहाँ वहाँ हो जाओगे तो भारी पड़ जाओगे. It will give you a big blow if you make a small mistake in this risk management. So you have to keep your mindset stronger
up to the dot and move on. I guarantee you that you will have very good income. Your bank accounts will have prosperity. Let's go to this sheet. Let me explain you step by step. Now, in this sheet, this is the risk management sheet. You have trading capital. What is your trading capital? Here I have written 2 lakhs. This risk per trade, you are not supposed to change this. This will be not, you will be not able to change it, and you should not change it. Maximum loss you are ready to take. Maximum loss you are ready to take with your investment of 2 lakhs. Forget about this 2. Make it 0. This I make it 0. Okay. Now, if you are having 2 lakhs and you are ready to take a maximum loss of, let us say, 15,000. अगर मैं 15,000 लूँ, 15,000 का लॉस लूँ, तो कोई मसला नहीं है. 2 लाख में से मैं 15,000 लॉस लूँगा, मुझे नींद आ जाएगी. If you do that, then what should be the what should be the stop loss? This is very important. And how much quantity you need to take, this is also very important. So for that purpose, let us go to tradingview.com. Let us go to any stock. I have taken already a stock over here so that I don't waste more time in showing you. I have put simple moving average 44. You will see here 44 simple moving average. The style is, I just increase the margin, increase the stroke size by 2, and that's what. So this is a 44 moving average. ठीक है. अब 44 मूविंग एवरेज पे जब डॉजी हैमर आ जाता है तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद वो ऊपर निकल जाएगा. इट कैन ऑल्सो कम डाउन. दैट इज़ वाई वी आर हैविंग दिस स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट. सो हियर व्हाट वी डू इज, I will magnify this area. This is the area where we need to take the trade. This candle is the one which is showing that we can make a trade over here, correct? This is 44 moving average. This has come to 44 moving average, and now it's a green candle. It's almost a hammer. See, if you look at this, it is almost a hammer. This, earlier there was a red candle which is a doji. Then the hammer came up. Next, now we need one more confirmation कि भाई हाँ ये ऊपर जाने वाला है, एक confirmation चाहिए. हम हाँ इधर आ गए तो हम ले लेंगे, ये नहीं है. That is not the way it is. So we need one more confirmation. So for getting that confirmation, what we will do is we will buy above the high of this. What is above the high? Let me take this. You see, there is this point above the high. For this point is above the high. ठीक है. So we will, if I zoom it further, you will see this is above the high. ठीक है. ये डे चार्ट है. डे चार्ट में इसके ऊपर जब स्टॉक का प्राइस जाएगा तब हम बाई करेंगे. तो हमने क्या किया, हमने वेट किया दूसरा दिन. ठीक है. ये दूसरा दिन क्या था, 25 जनवरी का वेट किया, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, ये तो रेड कैंडल बन के नीचे रह गया. देन आई वेटेड फॉर वन मोर डे. एक और दिन वेट कर लिया, तब जाके स्टॉक की रेट ऊपर चली गई. तो अब हमने ये जो लाइन डाला है ब्लू वाली, this line what we have put, this horizontal line is standing on what?
229, तो हमारा बाई होना चाहिए 229 के ऊपर, मतलब इस कैंडल में हम बाई करेंगे, लेकिन स्टॉप वी विल बाई इट above the high of this candle, above the high of this candle, so that is 229. So we will buy it, let us say 229.5. ठीक है, so we will write it over here. Entry हमारी 229.5. So this is our entry. Now we go again here. And what is our stop loss? The stop loss should always be on what candle you are entering. This was our candle, so this was the candle what we buy above the high. So the candle in which we buy above the high, the previous candle, here it is the red one, इसके नीचे होने चाहिए, या जो कैंडल में हमने टारगेट लगाया है उस कैंडल के नीचे, जो भी नीचे होगा. सो इन दिस टू कैंडल्स, विच इज द लोवेस्ट? द ग्रीन कैंडल इज द लोवेस्ट. दिस इज लिटिल बिट हायर. So green candle is the lowest. So what we will do is we will take another horizontal line. We will put it exactly over here. It is not exact. Let us put it exactly on the lower low. And what is this rate showing? 219.85. Correct? Exactly on the row. 219.55. So what we do is, now we got the stop loss. This is our stop loss. So 219.5 is our stop loss. Correct? That means if you are losing in this, we have 10 rupees per share we are ready to lose. I hope you understood this. The candle in which we are buying, this one, you have to buy above the high of this candle. And when it came, when above the high came, it did not come the next day, it came the next day after that. So that day we bought it. Now the big question is, if it is coming after 5 days, you don't do anything, you don't buy it, because if it is coming after 5 days means it's going on the same line, it's going parallel, sideways. The market is going sideways, so there's no point in buying on sideways market. The market should always be upwards. Correct? You want to move up, that is why you need to buy. You don't need to go sideways to buy. So you need to wait up to 2 to 3 days. If the above the high line, above the high price is coming within the 3 days, it's fine. If it is going to come in the 4th day, don't touch it. Repeat. If it is coming on the 4th day, don't touch it. हम सिर्फ 3 दिन इंतजार करेंगे. उस कैंडल के अबव द हाई के ऊपर हम बाई करेंगे. उसका रेट है 229. 229 में हम बाई करेंगे. वो 229 के लिए हम कितना दिन वेट करेंगे? सिर्फ 3 दिन. अगर 3 दिन में नहीं आ रहा है, चौथे दिन आ रहा है, तो हम हाथ नहीं लगाएंगे उसको. ये माइंडसेट दिमाग में रखना. हो सकता है कि चौथे दिन आने के बाद फिर वो ऊपर चला गया. It can happen that it on the 4th day it came above the high and then it went up, and you will say, oh my God, what did I do? Don't, because there are many other trades. Every day this is happening in the market. So you don't be disappointed on that. And where do you keep your stop loss? Once again, the stop loss should be
one candle earlier. One candle earlier, whichever is the lowest low. Now in this case, the red was not the lowest low, the green was the lowest low. The same candle was the lowest low. So we kept it on the same candle. So now this is our stop loss. Now how many shares we need to buy in this? This is calculated. So what we do is we put our per trade loss is 1000. If our maximum loss for 2 lakh rupees was 15,000, our loss for one trade is marked as 1000. That's why I told you don't try to change this column. Let this column be as it is, because if you lose the calculation, if those who know it वो कर पाएंगे, जो नहीं, जो एक्सेल में इतना जानते नहीं हैं वो नहीं कर पाएंगे. सो डिवाइड बाय 10, क्योंकि हम 10 रुपये लॉस ले सकते हैं पर ट्रेड आपके कैलकुलेशन के हिसाब से. तो वो होएगा 100 शेयर्स. आप 100 शेयर्स बाय कर सकेंगे उस कंपनी का. तो इसका वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू दिस इंटू 100. आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में होगा 22,950. चलो, अगर आप यहाँ पे 2 लाख के बजाय आप बोलते हो मेरे पास 2 लाख नहीं है यार, मेरे पास सिर्फ 1 लाख है, आई हैव ओनली 1 lakh. ओके, एंड इन 1 lakh आई कैन टेक ओनली अप टू, लेट अस से 7,000. Okay, in that case what is the share you will be buying? You will be buying only 47 shares. Now here you are not supposed to play like an over smart person. Sorry to say, use these words, but here you are not supposed to do anything like 47, oh let me take 50. Don't do that. Let it be 47. Keep it the number as it is. Don't try to round it up. Never try to purchase shares round. मेरे दोस्त ने बोला यार ये कंपनी बहुत अच्छा है, मैं ब्लाइंडली जाके परचेस करूँगा 50 शेयर 100 शेयर. नहीं करना है आपको. पहले आपको स्टडी करना है आपके सिस्टम में बैठता है क्या. अगर सिस्टम में बैठता है तो आपको उस हिसाब से ही आपको शेयर खरीदना है. Let us say you are going to make, this is Reliance, this is 44 moving average, and this moving average is moving upwards. You can see it over here, it is moving upwards, and you want to make a trade over here. Okay, so you are having a plan to take a trade over here. This hammer has come very close to the moving average and you are going to take a trade over here. I maximize it. Now here I draw a line on above the high, and then I draw a line which is the earlier candle's low, correct, here. So in this one what happened was you got a trade on the second day. दूसरे ही दिन आपको ट्रेड मिल गया हो. आपका अमाउंट था 2304.55, मतलब 2305, और आपका स्टॉप लॉस था 2258. तो हम यहाँ रिस्क मैनेजमेंट जाएंगे, कितना था 2305. Okay, and the stop loss was 2258. So we put the stop loss as 2258.
8. Here you got 10 shares. Okay. Now what happens is, this was only a 47 rupees. So 47 rupees was taken over here. The loss, the appetite of loss in this trade was 47. So you got 10 shares and you took this one. So now let us also talk about target. अब टारगेट के लिए फिर हम उसी एग्जाम्पल लेंगे. हमने I removed that, so we have to do it again. This one here we have taken, that is 229.5, and the second one was, I think, 219.5 stop loss. 219.5. so we are going to take 10 shares. This is, let us put it as 2 lakhs. And let us put this as 15,000. So we took 100 shares. 22,950. Now we had the stop loss, we have 10 rupees. So how much should be our profit? Our profit should always be 1:2. This should be always our profit. Profit should always be 1:2. So if 1:2 is the profit, what does it mean? उसका मतलब क्या होता है? 1:2 का मतलब क्या होता है? अगर 229.5 पे हम ले रहे हैं इसको, 10 रुपये का जो फ़र्क है, 10 रुपये में हमको 20 रुपये प्रॉफिट चाहिए. 10 रुपये लॉस है तो हमको 20 चाहिए. दैट इज़ 1:2. So now if 229.5 was our buy, if 229.5 was our buy, our profit should be 249.5, correct? 249.5 अपना प्रॉफिट होना चाहिए. यहाँ पे आपका टारगेट है. तो टारगेट यहाँ पे है 249.5 पे. सो इज इक्वल टू 249.5 into 100 shares. So how much did we earn? ये हमारा टारगेट था. टारगेट पे पहुंच गए हम. ठीक है. तो हमने कितना कमा लिया? प्रॉफिट कितना हुआ? ये माइनस ये, सॉरी, इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2000 रुपये. So if our stop loss was 10 rupees and we were ready to risk 1000 rupees, our profit was 2000. So this is how you follow the system. इस सिस्टम को हमेशा फॉलो कीजिएगा. रिस्क मैनेजमेंट इसमें से बिल्कुल हटना नहीं चाहिए. इस रिस्क मैनेजमेंट को आप फॉलो करोगे, you will be a winner. I'm sure 100% that you will be a winner in this. So I want everybody to follow this step by step and be a winner. You will find this sheet in the description, and don't do anything with this B column where I have marked yellow. Please don't do anything over here. Rest you can change according to how you are taking the trade. Okay, thank you.